कई बार तो cost of arbitration is more than the cost of dispute itself. Since you're also the author of Energy Arbitration Online Cert course provided by DGEF, so sir, can you please tell us something about the best practices in drafting an arbitration agreement? While drafting an arbitration agreement, few checklists which have to be followed, and उसमें हमेशा अपनी कंपनी के हिसाब से आपको checklist पहले बना लेनी चाहिए. Arbitration agreement में क्या क्या clauses होंगे, and this is a part of dispute resolution strategy. So you are doing two things actually together. One is you are making a dispute resolution strategy for your company, and secondly जो वो reflect करता है वो arbitration agreement में reflect कर जाए. अब हम ये देख लेते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो मेजर चीजें हैं, जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए. सो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में वेन्यू मेंशन करते हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ क्लियरिटी एक्चुअली. सो इट शुड बी ऑलवेज क्लियर वेयर द वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन शुड बी देयर इन केस अ डिस्प्यूट अराइजेस एक्चुअली. क्योंकि आपने अगर वेन्यू नहीं लिखा तो then there is lot of litigation, international and national litigation, as to what is the appropriate venue actually. So that has become important. Second is timeline also becomes important. So arbitrators may take ages to decide the matter, and I understand जो recent amendment हुआ है arbitration act में, वो clearly कहता है कि 1 year plus 6 months. So 1.5 साल में arbitration dispute should be resolved. And that is absolutely correct. Or acha, this was one of the best amendments, because I have seen arbitration proceedings going on for 3, 4, 5 years. So we used to discuss, it was better कि हम civil suit file कर देते या normal courts में चले जाते, तब भी हमारा matter decide हो जाता actually. लेकिन timeline क्यों important है? भाई आपको जरूरी नहीं है कि 1.5 साल में या 1 साल में dispute resolve करना है. If you mention in the arbitration agreement that dispute has to be resolved in 3 months, it has to be resolved in 3 months. It is allowed. 1 साल और 1.5 साल जो लिमिट फिक्स करी है, वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स करी है. मतलब the arbitration act says कि भाई 1 year और shorter time. So effectively, if you think it is a small dispute, उसके कारण काम रुक रहा है, आप उसमें लिख सकते हैं कि 1 month, 30 days में it should be decided. You can also write it that day-to-day hearing should take place. So that arbitrator does not sit in his sweet will कि जब उसको मन है तो वो रेस्ट हाउस बुक कराएगा, and then he will say a 5-star hotel should be booked, and then he takes his sweet time to book. So in the arbitration, to protect your company, to protect your own organization, you can have these clauses in arbitration agreement. Whoever is the arbitrator who will do day-to-day hearing actually. So every day hearing will happen. Third important thing is language. It will be very convenient if you write what language your company is, company prefers. So there is no issues with respect to language. कोई बोलेगा national language है, कोई international language बोलेगा, कोई और कुछ. If there is one party is from France and one party is from India, and you have not mentioned the language, so they will assume that it should be in French, and you will assume that it should be in English or Hindi or any other language. Mention the language. It becomes super easy for arbitrator also. You can also mention the qualification of arbitrators. So qualification in the arbitration, see, I am telling you few points of checklist. Every company has to make its own checklist for arbitration agreement, and arbitration agreement should be part of all major agreements actually. Generally what I have seen is आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ना एक क्लॉज में डाल देते हैं या 1, 2, 3 पैराग्राफ में डाल देते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. मैं कहता हूं कि एनेक्शन में डाल दो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ज्यादा बेटर होगा, उसमें लिख दो. और द ऑल्टरनेटिव वे इज दैट यू टेक अप इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइंड होता है, पर आप उस इंस्टीट्यूशन के आर्बिट्रेशन प्रोसीजर्स या रूल्स के ऊपर पढ़ लो. सो योर टीम शुड बी वेल कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर रेफरिंग योर मैटर्स फॉर आर्बिट्रेशन. वी वर डिस्कसिंग अबाउट चेकलिस्ट टू बी followed while drafting an arbitration agreement, and this arbitration agreement is a part of your dispute resolution strategy. All right. So मैंने बोला कि venue लिखना चाहिए, timeline should be there, day to day hearing भी आप दे सकते हो, 2 महीने भी बोल सकते हो, 1 महीना भी बोल सकते हो. There is no bar actually. फिर language should be there. What is the language? There should be clarity. फिर उसके बाद qualification is of arbitrators is super important. What is happening is generally officers, senior officers, IAS officers and administrative officers, they are being appointed as arbitrators, and retired even judges are being appointed as arbitrators. But unfortunately
sometimes and most of the times they do not have background in power sector, and this makes it little difficult to explain them simple concepts of power sector कि भाई पूरा फिडिक कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है वो पूरा समझाना पड़ता है, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में क्या लिखा है समझाना पड़ता है, ओपन एक्सेस क्या है हमें समझाना पड़ता है। अगर ये बेटर हो, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आप क्वालिफिकेशन में लिख दो द पर्सन whoever is being appointed as arbitration tribunal should have experience in power sector for 10 years or 15 years, और उसको और स्पेसिफाई भी कर सकते हो रेगुलेटरी लीगल या आर्बिट्रेशन सेल में उसने वर्क करा हो 10-15 साल तक, इट इज अलाउड। सो व्हाट विल हैपन, आप सब लोगों का हम लोगों का टाइम कम हो जाएगा उनको समझाने। दे विल ऑलरेडी बिकॉज दे हैव वर्कड इन द पावर सेक्टर फॉर 10 years, they have taken all the training। जैसे ही आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको पता है कि ओपन एक्सेस क्या है, उनको पता है पावर सेक्टर की जो बेसिक न्यूएंसेस हैं वो क्या है, उनको पता है अभी फिटिक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, या और भी बहुत सारे इश्यूज जो है बेसिक स्ट्रक्चर पता होता है, तो आर्बिट्रेटर्स टेक लेस टाइम टू डिसाइड द मैटर। इट विल बी there will be more clarity during arbitration proceeding. So, and it can be a balance also. So maybe one retired officer can be chairperson, or retired judge can be one member, and other members can be with experience in power sector of 10 to 15 or 20 years, which will expedite. So this qualification should be mentioned in arbitration agreement, which will make it super easy for the litigant and the arbitrator also. Next, one checklist can also be that कि आप ad hoc arbitration करना चाहते हो या institutional arbitration करना चाहते हो। So institutional arbitration में you have to choose कि किस institution के पास। So to make it जनरली आर्बिट्रेशन ढूंढने में दिक्कत होती है। आर्बिट्रेशन का इट इज प्रोसीजरल, एक्चुअली मास्टर आर्बिट्रेशन क्या है, इट इज अ प्रोसीजर। तो जैसे सिविल प्रोसीजर कोड होता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, तो थर्ड प्रोसीजर जो है वो प्राइवेट प्रोसीजर है, वो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर। सो यू हैव टू बी अ मास्टर इन प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसका टेक केयर करने के लिए वी हैव इंस्टीट्यूशंस। There are a lot of arbitration institutions. We'll discuss some of the institutions also during the course of our discussion. But you can decide कि आप कौन से आप institutional arbitration में जाना चाहते हैं या आप ad hoc, where the parties will decide who are the arbitrators, or you will pre-decide that this person will be arbitrator. That has to be mentioned in the arbitration agreement. So once a dispute arises, you don't go running out कि क्या procedure apply करना है। Next है कई बार छोटे छोटे disputes में जो डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी साइन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे भी रिजॉल्व हो सकते हैं, उनमें भी पूरा प्रोसीजर आर्बिट्रेशन का फॉलो करा जाता है। कई बार तो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन is more than the cost of dispute itself. Recently, and this is a different example, but recently arbitral tribunal was appointed. They fixed their own fees 5 lakhs per sitting actually. तो 3 जजेस थे, 3 members थे arbitral tribunal के, 15 lakhs per sitting only for arbitral tribunal, and lunch के बाद दूसरा sitting हो जाती, तो 30 lakhs for, so these costs are very very huge. In your arbitration agreement you can also mention what will be the payment given to the arbitral tribunal. You will contain your cost. Next checklist आप ये क्लियर कर सकते हो, जैसे अगर कोई इशू तुम्हें लगता है या आपको लगता है कि these small issues there is no requirement of oral hearing, you can write in the arbitral agreement that these disputes will be decided by documents, on the basis of documents only. No requirement of a person or law officer visiting the arbitral tribunal and discussing and then somebody arguing the matter is perfectly okay. And कई बार लोग ये पूछते हैं कि सर आर्बिट्रेशन का, एनर्जी आर्बिट्रेशन का अलग से कोर्स बनाने की क्या जरूरत है? This was the requirement from industry actually, because ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे इंडस्ट्री में अप्लाई बहुत रेयरली हो रही हैं एक्चुअली। हम लोग सीधे सीधे जंप करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या बोला है, ये इसमें क्या बोला है। भाई आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड टेक द मैटर फॉरवर्ड। हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने और इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में तो बहुत चीजें बोली हुई है। So these small things which will have a big impact on resolving the dispute quickly to safeguard the financial aspect of a power company are important, and this will in turn promote right to energy movement also actually. If the disputes are decided in 1 month, if everyone says कि ठीक है स्मॉल डिस्प्यूट 30 days में डिसाइड होनी चाहिए, और जितना भी बड़ा डिस्प्यूट हो, कितना भी बड़ा डिस्प्यूट हो, 6 महीने से ज्यादा क्या लगाओगे आप? भाई आप डे टू डे हियरिंग करो, उसको क्लोज करो। इट मे बी a 10 lakh crore dispute, how does it matter? Whatever arbitrators and everyone will understand in 5 years, let us understand in 6 months and close it. Revenue of the state and price escalation, तो we have already seen
कितना प्राइस एस्केलेशन हो जाता है, डिले प्रोजेक्ट। ऑल राइट, सो नेक्स्ट चीज है कि आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में यू कैन राइट अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स आल्सो, एंड यू कैन इवन ट्रेड सीक्रेट तो छोड़िए, आप अपने अवार्ड को भी कॉन्फिडेंशियल कर सकते हैं। सो वॉट एवर मे बी द अवार्ड, यू कैन राइट इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कि इट विल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन besides the two parties, nothing to it. So what happens, whatever confidential information आपके hydroelectricity plants हैं, उनकी designs हैं, या any new thing which you have discovered or you have innovated, and maybe it is a matter of national security also, border area में project है कोई भी, so आप ये clause include कर सकते हो arbitration agreement में कि आपके trade secrets protected रहेंगे, and arbitration award itself will be confidential. So even the arbitral tribunal cannot disclose whatever award they have given. It will be between the two parties only. Whatever is the next checklist can be whatever is the composition of arbitral tribunal, that you can also decide. You can also place it there in the as a checklist of arbitration agreement. उसके बाद एक और चीज है which we forget, limitation of raising arbitral disputes. Sometimes we see कि आफ्टर 3, 4, 5 years people are raising arbitration dispute. भाई लिमिटेशन एक्ट में भी लिमिटेशन है कि 3 साल बाद फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं रेज करना है, बट आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट आप 5 साल बाद रेज करोगे तो कैसे काम चलेगा? सो इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यू आर अलाउड to write whatever is limitation of raising arbitral dispute. So you can do कि भाई whatever dispute is there, आप please raise it in 3 months, not more than that. भाई वहीं पे खत्म करो उसको dispute को। 3 महीने में जो भी अगर आपको इशू आ रहा है, 3 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, जो भी whatever is suitable to your company should be clearly specified. You can also, if another एक और checklist की बात करें, तो what will be the regime of penalty? Mention it in arbitral agreement. It is allowed. Perfect. Unknown penalty से better है कि known penalty है कि अगर ये गलती हुई है, ये penalty होगी. See, every company will have their specialized checklist. Every company will have their specialized dispute resolution strategy depending on what kind of organization it's this, and what are the stakes involved, who are the stakeholders. उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, पर जो नॉर्मल चेकलिस्ट है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इफेक्टिव बनाएगी, उसमें से कुछ मैंने बताई है, जैसे वेन्यू क्लियर होना चाहिए, टाइमलाइंस, डे टू डे हियरिंग होगी कि 3 महीने में खत्म करना है, ये क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी देयर, फिर उसके क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शुड बी, it should be in your control. If it is not in your control, then go to apply CPC, apply the normal procedure of the court, file a petition. The purpose of arbitration, going in for arbitration, was that quickly you dissolve. It is a private court actually. आप फटाफट उसको डिसॉल्व करके आगे बढ़े, काम में फोकस करें, नॉट इन fighting whatever your contractor or anybody, your user or consumer actually. So oral hearing भी आप लिख सकते हैं, फिर आप trade secrets भी protect कर सकते हैं. You can decide that arbitration award should also be secret. You can also decide that क्या composition होना चाहिए arbitration tribunal का, limitation भी आप रख सकते हैं कि भाई this is the limitation. जिस दिन incident हुआ है या जिस दिन due हुई payment, उसके 3 महीने के अंदर ही आपको raise करना है arbitration. You can even write 1 week because the other party will accept and sign it. Regime of penalty भी clear होगी. So these are the things which should be in general taken care of while drafting a arbitration agreement, and dispute resolution strategy भी आपकी कंपनी में इनबिल्ट होगी, दोनों साथ में, they are brothers and sisters, they go together actually.